Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics Class 9th chapter wise most important MCQs. Inshallah, in the next video, I'll also discuss the most important short, long, and numericals from the full book according to the फॉर योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआईआर टोटल सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट होते हैं, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल यूनिट में मेजर करते हैं, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थर्ड इज एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। डियर स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 पुट करेंगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सो -6 + 2 gives -4. So the option C will be correct, which is 2 into 10⁻4 second. 4 is the smallest quantity among दीज इज सबसे छोटी क्वांटिटी जो गिवन है इनमें बनेगी 5000 नैनोग्राम्स। एज यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ नैनो इज 10⁻⁹, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ इज विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट suitable to measure the internal diameter of test tube bottle, तो vernier caliper is the best instrument for this purpose. सिक्स इज़ अ measuring cylinder is used to measure. measuring cylinder से हम वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवन इज़ 1 cubic meter इज इक्विवेलेंट टू 1 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड। अर्थ की स्टडी जियो फिजिक्स कहलाती है। एज यू ऑल नो द वर्ड जियो मीन्स अर्थ। 9 is the least count of vernier caliper is 0.1 millimeter. 10 is 1 liter is equivalent to, it will be 1000 centimeter cube. 11 is the least count of meter cube is मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होती है। 12 इज़ द बेस यूनिट इज़, बेस जो है वो किलोग्राम होता है, लेंथ मैस, so the option B is correct. 13 is the length of meter rule is 1 meter length होती है total, so the option B is correct. 14 is 1 micrometer is equivalent to 1 micro जो है अभी मैंने आपको बताया था एक इसी चैप्टर के MCQs में 1 माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, so the option A is correct. 15 is significant figures in 0.00580. स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, 8 एंड जो लास्ट वाला 0 है वो, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं। द फर्स्ट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज़ अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन when it moves line without rotation, so the option C is correct. Second is the motion of an object about its own axis, ऐसी motion कहलाती है rotatory motion, so the option B is correct. 13 is which of the following is a vector quantity. वेक्टर जो है वो displacement है, so the option C is correct. 4 is by dividing displacement of a body with the time we obtain
डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करने से हमारे पास वेलोसिटी आती है, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 5 is a ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 6 is a change in position is called, पोजीशन में चेंज जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. 7 is a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. स्पीड हमने इसको मीटर पर सेकंड में करना है. जब आप इसको 1000 और डिवाइडेड बाय 2400 के साथ डिवाइड कराएंगे तो आप जो आपका रिजल्ट आएगा डैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, सो द ऑप्शन इज करेक्ट. 6 is a train is moving at a speed of 72 किलोमीटर पर और its speed expressed in मीटर पर सेकेंड, तो बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी इज द बेस्ट. 9 is Brownian मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मोशन होती है गैस के पार्टिकल्स की जो इरेगुलर मोशन होती है इसे कहा जाता है, सो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन. 10 इज़ डैश इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. 11 इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली डाउन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, एक्सेलरेशन जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, सो इट्स वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 12 इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज, इसे लीनियर मोशन कहा जाता है, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 12 is the motion of a 13 is the distance covered in unit time is called, इसको speed कहा जाता है, so the option A is correct. 14 is the motion of insects is called, इसे random motion कहा जाता है, it's an example of random motion. 15 is the speed of tiger cheetah is, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है. 70 किलोमीटर पर और, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं. एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होता है जब नेट फोर्स नहीं होती, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सेकेंड इज़ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, inertia always depends upon the mass, so the option C is correct. Third is a boy jumps out of a moving bus, there is a danger for him to fall in the direction of motion, so the option C is correct. Fourth is a string is stretched by two equal and opposite forces of 10 newton each, the tension in the string is, जितनी फोर्स होगी उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंशन होगी, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिफ्थ इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का यूनिट पी इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला होता है, तो जब आप इसकी वैल्यूज़ यूनिट्स की पुट करते हैं देन यू विल गेट द एस आई यूनिट एज न्यूटन सेकेंड, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. सिक्स इज when horse pulls a cart the action is on the action hoga earth and the car, so the option D is correct. 7 is which of the following material lowers friction when pushed between sliding surfaces. फ्रिक्शन जो है वो ऑयल से इजीली रिड्यूस की जा सकती है, द रेजिस्टेंस फोर्स को हम ऑयलिंग करके मशीनरी को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 7 MCQ is which of the following material. 8 is coefficient of friction between the tire and the dry road is, coefficient of friction की वैल्यू होती है 1 जब
टायर और ड्राई रोड के बिटवीन लिया जाता है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 इज द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, इट्स mass will be W इज इक्वल टू एम जी। जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे देन यू विल गेट 14.7 kg, so the option B is correct। 10 is 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, आपको पता है न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडीज कार, ये जो है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक डेरिवेशन दी हुई है, उसमें भी आप लास्ट पे ड्राइव करते हैं। 12 MCQ is in an isolated system, the momentum after the collision of two bodies is, बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डैश टू द मोशन ऑफ, इसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर। 14 is if the velocity of a body becomes double then centripetal force will be, centripetal force जो है वो 4 times greater हो जाएगी, so the option D is correct। 15 is coefficient of friction between the tire and the wet road is 0.2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं। द फर्स्ट MCQ इज टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस, ये जो है वो कपल की डेफिनेशन है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Second is the number of vector forces that can be added by the head to tail rule is, it's uh, any number of forces you can add while using the head to tail rule, so the option D is correct। Third is the number of perpendicular components of a vector force are, वेक्टर फोर्स के टोटल जो हैं वो 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 is a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal, its horizontal component is, dear students जब आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, then you will get the answer D 8.7 Newton। Fifth is if a force of 10 Newton is making an angle with x-axis then the horizontal component is, यहाँ पे भी आप जब फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे देन यू विल गेट 5 न्यूटन। 6 इज if y Fy is equal to 4 Newton and Fx is equal to 3 Newton, what is the magnitude of the resultant force? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्केयर रूट एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ आई का स्केयर बाय पुटिंग द वैल्यूज, देन यू विल गेट 5 न्यूटन आंसर, सो द ऑप्शन is correct। 7 is a body is in equilibrium when its acceleration is 0, so the option D is correct। 8 is racing cars are made stable by, रेसिंग कार को हमेशा स्टेबल बनाया जाता है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके, सो द ऑप्शन C is correct। 9 is first condition of equilibrium is, it's sigma F is equal to 0, या ये भी हो सकता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 is the value of tan
1045 is 1045 जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं then you get the answer of 1, so the option D is correct. 11 is SI unit of torque is टॉर्क का SI यूनिट होता है न्यूटन पर सेकेंड्स, न्यूटन मीटर, सॉरी, न्यूटन मीटर, सो द ऑप्शन A is correct. 12 is in a right angle triangle, length of base is 4 centimeter and perpendicular is 3, then its cos theta is, जब आप cos theta की वैल्यू पुट करते हैं cos theta is equal to base over hypotenuse, then you will get the answer of 5 centimeter, which is option B. 14 is the net force acting on a rotating body with uniform speed is, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वहाँ पे टोटल नेट टॉर्क होता है 0, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. 15 is torque depend upon, torque always depend upon the force and the moment arm, so the option C is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं. एंड द फर्स्ट MCQ इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेज एट, it always vanishes at infinity, so the option B is correct. Second is the value of g increases with the value of g altitude में decrease होने से increase होती है, so the option C is correct. Third is the value of g at a height 1 Earth's radius above the surface of Earth is, it's uh, half g, so the option D is correct. 4 is 1/4 g, so the option D is correct. Fourth is the value of g on moon surface is 1.6 meter per second square. What will be the weight of 100 kg body on the surface of the moon? It's 160 Newton. So the option B is correct. Fifth is the value of g at the surface of the moon is, ये आपने याद कर लेनी है, 1.62 meter per second square. Six is the altitude of geostationary orbit in which the communication satellites are launched above the surface of the Earth is 42,300 kilometers, so the option D is correct. 7 is the orbital speed of low orbit satellite is, आपने याद रखनी है, it's 8,000 meter per second. 8 is moon complete its one revolution around the Earth is, it always cover its one revolution in 27.3 days, so the option D is correct. 9 is the moon is nearly dash away from the earth, it's 380,000 kilometers, so the option A is correct. 10 is the velocity of the geostationary satellite with respect to the earth is 0, so the option A is correct. 11 is the gravitational field strength near the surface of the earth is, it's 10 Newton per kilogram, so the option D is correct. 12 is the total number of satellites in global positioning system is, टोटल जो है 24 सैटेलाइट्स यूज़ की जाती हैं GPS में, so the option C is correct. 13 is the value of gravitational constant is, आपने याद रखनी है कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.63 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और स्मॉल g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 13 is the value of gravitational constant is, it's 6.673 10 raised to power -11 Newton meter square per kilogram square, the option B is correct. 14 is the mass of the earth is, mass of the earth की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 में भी टॉपिक है, उसके लास्ट पे आपकी वैल्यू आती है
into 10 ki power 24 kg, so the option C is correct. 15 is the value of G on Mars is it's 3.73 meter per second square, so the option A is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं. एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज the work done will be zero when the angle between the force and the displacement is, as you all know, the formula of work done is W is equal to ft cos theta. When you put the value of cos as 90, then you will get the minimum value of the work done. So the option C is correct, which is 90. Second is the work will be maximum when the angle between the force and the displacement is, और वर्क डन आप मैक्सिमम तब लेते हैं जब आप कॉस ज़ीरो पुट करते हैं. बाय पुटिंग कॉस ज़ीरो you get one answer, so the option A is correct. Third is if the direction of the force is perpendicular to the direction of the motion of a body, then work done will be zero. Option C is correct. 4 is if the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will become 4 times. So the option D is correct. 5 is the work done is lifting a brick of mass 2 kg through a height of 5 meter above the ground. It's 100 joule. So option D is correct. 6 is the kinetic energy of a body of mass 2 kg in 25 joule. The speed is, by using the formula you get 5 meter per second, so the option A is correct. 7 is which of the following convert light energy into electrical energy? Photocell always convert the light energy into electrical energy, so the option D is correct. 8 is the energy stored in coal is, coal में हमेशा जो है केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ऑप्शन C is correct. 9 is energy stored in the dam's water. It's डैम के का जो वाटर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, द एनर्जी ड्यू टू हाइट, so the option B is correct. 10 is in Einstein mass energy equation, C is the speed of light. 11 is rate of doing work is, इसे कहा जाता है power, so the option C is correct. 12 is 1 horse power is equal to 746 watt, option B is correct. 13 is 1 megajoule is equal to, मेगा की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 6 होती है, और जाउल साथ वैसे ही आएगा, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. 14 इज व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, हमेशा हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल होती है, और जो मोशन की वजह से होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 1 जाउल इज़ इक्वल टू, 1 जाउल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं. एंड द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डोंट लीव देयर पोजीशन. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, the option D is correct. Second is which of the following metals is the lightest one. सबसे lightest जो है वो aluminium होती है, option B is correct. Third is SI unit of pressure is Pascal, which is equivalent to, Pascal is always equivalent to 1 Newton per meter square. Option A is correct. 4 is what should be the approximate length of a glass tube to construct a water बैरोमीटर, इसके लिए 11 मीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. फिफ्थ इज़ अकॉर्डिंग टू अर्शमीदस अपथ्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू, ये आप इसकी डेफिनेशन में भी मेंशन है दैट द अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, so the option A is correct. 6 is the density of a substance can be found with the help of
किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, वी ऑलवेज यूजेस द आर्शिमीदेस प्रिंसिपल. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. 7 इज अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. 6 इज डैश वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ. हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल लॉ पे के अकॉर्डिंग वर्क करता है. 9 is the upthrust force of the liquid equivalent to rho gv. So the option A is correct. 10 is at a sea level the atmospheric pressure is. The option D is correct. 11 is if a force will be applied on a smaller data, pressure will become pressure ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है. So the option B is correct. 12 is mass of a unit volume of a body is इसे कहा जाता है density. As you know, density is equal to mass over volume. So the option D is correct. 13 is molecules are very close in the body of सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 14 इज मर्करी इज डैश टाइम हैवियर देन द वाटर. मर्करी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर. आपने ये वैल्यू मेमोराइज कर लेनी है. 15 is in SI system, the unit of Young's modulus is it's a Newton per meter square. Option C is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं. द फर्स्ट MCQ इज़ वाटर फ्रीजेज एट. वाटर जो है वो 32 फ़ारेनहाइट पे जो है फ्रीज होता है. So the option B is correct. Second is temperature of ice in freezer is. freezer में -18 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होता है. Third is normal human body temperature is. normal human body temperature 37 डिग्री होता है. Option B is correct. Four is mercury is used as thermometric material because it has इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्मॉल हीट कैपेसिटी. So the option D is correct. Fifth is which of the following material has a large specific heat? It's water. So the option C is correct. Six is which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion? Aluminium. So the option A is correct and it is also the lightest metal. ये भी आपने याद रखना है. 7 is what will be the value of beta for a solid for which the value of for which has the value of 2 into 10 की power minus 5 per Kelvin. Option B is correct. 8 is which of the following affect the evaporation. evaporation जो है वो temperature, surface area of a liquid or air या wind इन तीनों पे depend करती है. So all the factors affect the rate of evaporation. Option D is correct. 9 is the specific heat of water is it's a 4,200 joule. So the option B is correct. 10 is the temperature 5 degree on Celsius scale equal to the Fahrenheit. जब आप इसकी कन्वर्जन टेम्परेचर स्केल थर्मोमीटर स्केल कन्वर्जन करते हैं formulas को लगा के, then you will get 122 Fahrenheit. 11 is on Kelvin scale the value of absolute zero is it's a minus 273 degree. 12 is on Celsius scale the temperature 300 Kelvin will be 27 degree. Is also the temperature conversion by using temperature conversion scale formulas you get 27 degree. 13 is the value of specific heat of water of silver in joule per kilogram per Kelvin is 235. Option
C is correct. 14 is the coefficient of linear expansion and volume expansion are related by the equation beta is equal to 3 alpha. Option B is correct. 15 is specific heat of water of dash is maximum. Specific heat of water is always maximum, so the option D is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिज़िक्स क्लास नाइन्थ के लास्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं. द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय. हीट सॉलिड में ऑलवेज कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है. यूजुअली हीट ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. और सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कंडक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सेकेंड इज़ व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी of a wall. If its thickness is double, it becomes half. Option C is correct. Third is metals are good conductor of heat due to the metals good conductor of heat होते हैं always due to having the free electrons or unbound electrons. Option A is correct. 4 is in gases heat is mainly transferred by. gases में कन्वेक्शन प्रोसेस होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. फिफ्थ इज कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द upward movement of molecule. Option C is correct. 6 is false sealing is done to insulate the ceiling. Option D is correct. 7 is rooms are heated using gas heaters by convection and radiation. Option B is correct. 8 is land breeze blows from land to sea during night. Option C is correct. 9 is which of the following is a good radiator of heat? A dull black surface. Option B is correct. 10 is the example of bad conductor is wool is always the bad conductor. Option A is correct. 11 is the unit of rate of conduction of thermal energies. It's a joule per second. Option B is correct. 12 is the thermal conductivity of silver is dash, it's a 430. Option A is correct. 13 is which surface is the bad emitter? Shining silvery surface is the bad emitter. So the option D is correct. 14 is land breeze and sea breeze are the result of the convection. Option B is correct. 15 is poor conductor of heat is water is the poor conductor of heat. Dear students, inshallah in the next video I'll also discuss the most important short and long questions of the physics class ninth full book. I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel and kindly do comment, share and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.